अरे नहीं. Good evening all, and I welcome all the participants or speakers for the 5 days GST Gyansatra Series 1 organized by Pune branch of WRC of ICI. And to start with the series, which is like a test match, again I would reiterate the same statement because I had the same speaker today in the morning where we have started with the 5 days GST series for students, and there can be no other better batsman other than Munot sir to start with this series. Well, friends, each one of us are receiving various types of notices from GST. The GST law is changing, and every other day there is some other notification or circular coming in, and we are receiving notices. And over a period, there has been a lot of queries of members as well as to how these notices be addressed, and at times the notices are wrong as well. So how do we really reply to those notices, and how do we take care of this on an ongoing basis? So that is what we will be addressing today in our first session. But prior to that, I would request CA Rajesh Agarwal, the chairperson of our Pune branch of WRC, to give opening remarks. Over to you, Rajesh. Thank you, Sachin. Good evening, friends. I have just elected as chairman of Pune branch. I thanks to all support from members and my managing committee. We have structured this series just to understand the future consequences of the compliances we have done. Not only that, we have also covered the notice part, which we are covering today, will clear your many you can say issues in your mind, how to reply and how to go ahead with to the notices or intimations given by the department. All the faculties we have chosen are best in the field. Believe me, if you have concentrated with 100% focus, you will get returns 200%. Because after completion of series, you can imagine the problems which will come to your client after 2 years, 1 year. But you can imagine right now also, as soon as you come 100% attended this series. So that's why I request you all to give your 100%. I thanks to all members joining in large numbers. I also thank Swapnil for accepting this invitation. Without wasting much of your valuable time, I request Sachin to introduce today's faculty. Thank you, Rajesh. In fact, it's my pleasure to give introduction of CA Swapnil Munot, who is a practicing chartered accountant having keen interest in indirect taxes and foreign trade policy. He has authored books on GST titled Handbook on GST for Beginners. He has also authored 2 ebooks on GST e-way bill and GST Amendment Act. Till date, he has addressed more than 350 seminars on GST, indirect taxes, foreign trade policies across India, not only for our institute, but for professionals, officers, industries, and students. He has delivered lectures at various forums like Bombay Chamber of Commerce and Industry, Federation of Indian Export Organization, Ministry of MSME Government of India, Agra, Confederation of Indian Industries, CII, Maratha Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, and many more such other institutes as well. He has played vital role in reduction of late fees under GST permanently. He has been one of the person who had been following up for that. Twice he got opportunity to discuss issues and recommendations in GST with Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharamanji. He has been awarded as GST icon for his work under GST. He has expressed views on GST on various news channels as well, like CNBC TV, Z Business, Sam TV, Maharashtra One TV, and so on. And he also writes articles regularly for various leading taxation magazines and online portals.
So friends, in fact, I have given a very brief and very crisp introduction of our speaker, but I would surely, I can assume that you would have got what kind of skill sets and knowledge our today's speaker is carrying, and what kind of inputs we can really get from him. So without wasting any further time, I would like to hand over the charge of this session to Swapnil Munot sir. Over to you, sir, and happy learning to all. Thank you, Pune branch of ICI, Rajesh sir, Sachin sir, for giving me this opportunity to discuss a very burning hot topic in GST. Rather, I think in every office we are facing this issue. Various notices, orders we are getting from the department, which are running into lakhs and crores. So, how to handle the notices? As I observed that, as compared to legal practitioners, we see it a little lacking behind when it comes to the understanding the natural justice, understanding the procedure which department is supposed to follow, and we accept the order or the notice as it is, as if कि ये सब कुछ ठीक है. So with this background in mind, Rajesh sir and the team has designed this wonderful 5 days program. I'm sure that you'll benefit from this a lot. So today I'll be discussing on how to handle the notices. Now, how to handle the notices has two things, as to how to handle the client and how to handle the officer, right? Yes. When the notice is received, client will start saying this, "Sir, boss, sir, क्यों आया है? हमने क्या गलती की है? आपने क्यों नहीं देखा है?" And officer, he may not listen to what you are saying. So two scenario normally we face, that dealing with the client and also dealing with the officer. Now the GST fees, we expected that it will be very nice law. 2017 we had a lot of discussions, seminars कि ठीक है 2-3 सालों में GST अच्छा होगा, एक अच्छा simple law होगा. But as I see that, and we all are seeing that numerous changes are happening in GST, numerous changes are happening, and numerous changes are on the way in the pipeline. So really it's a complicated law becoming day by day. When I analyze that why GST is becoming so complicated day by day, I feel there are three-folded reason. One is that numerous changes, more than 1,000 notification circulars has been issued. Then second scenario is that so we professional taxpayers finding it difficult to cope up with all the changes. Another is that huge GST fraud is happening, huge GST fake invoice government is detecting. Because of that, they are making the GST provision stringent. On the various social media platform, we are criticizing about the registration being made a little difficult. We are saying that why government is making this complicated, or why they are raising so many queries. Friends, there is a reason. Government is finding the many fake registration cases. Please try to understand and appreciate that if you were an officer, how will deal with the cases? Therefore, they are raising the queries. But the problem is that the queries are not correct. I have a case where the person who is a Zomato delivery boy, and on his name, the fake turnover, fake two registration has been obtained, and there is a turnover of more than 100 crore. So there is always reason why government is making the provision strict day by day, because huge fake GST fraud is happening of ITC, fake invoicing, which you normally call. Just we will try to make session little interactive. So I will ask you, what do you feel? What can be this figure of fake invoicing? Any guess? You can just mention in the chat box. Yes, friends. Chat box is open, sir. Friends, so this amount is here. I just mentioned the amount as 1,20,000 crore. It is not so. The amount is, I think, it is more than 2.5 lakh crore to 3 lakh crore. It's a old DGJ amount. DGJ
current figure is around 3 lakh crore, and the state authorities, they are also detecting such fake cases. So it is again ranging around 50,000 approx. There is no any calculation about it, but I feel it is around 50,000 crore. So in totality, this amount is 2,50,000 crore. We have seen the 2G, 3G coal scam. They were also not exceeding this amount. I think they were 2 lakh crore some, but this amount is crossing 2 lakh crore. More than 1,000 arrests has happened in GST. I think in Maharashtra only this year, 76 arrests they have made in this financial year. So a lot of fake invoicing is happening. And third is that what we expect that government should make the changes in law, and what government is making the law changes, there is a drastic difference. As per the government, allowing nil return by filing the SMS is something a simple feature, or they are simplifying the GST, which we are not expecting this. So this is third scenario. So in general, normal notices are received by taxpayer for input tax not paid by supplier, supplier not existence, 3B, 2A mismatch, 16.4, ineligible ITC, interest not paid, RCM liability, etc., etc. I am sure almost all the type of notices you must be dealing in your offices. Now, when it comes to notice, when I discuss with the professionals and consultant about GST notices, I observe that this 4-5 scenario that taxpayer is not aware that officer has sent the notices. Many times, professional has given their mail ID in the client. So client is not aware that there is any notice. Notice might be on the email. Notice might be on the spam box. Notice might be on the portal. So this is one of the common scenario which we observe. Sometimes client or taxpayer is not aware of submission made. Kuch submission kiya tha, when some case comes to you from another consultant. Taxpayer says we have made some submission, but he will not have a copy of that. Then the consultant are not correctly or properly aware about the issues, whether this is the issue in the law part or the calculation part. Reconciliation is not prepared. And one of the very important, reply is not submitted in the proper way. There is a format for replies given in GST law. However, normal replies are submitted in the plain Wagyu letter. I feel we will soon have some cases in coming future where department will reject your reply by stating that it is not in the proper format as given in the CGST rules. And very peculiar that taxpayer is not aware who is my jurisdictional officer, whether state or center. In GST, we have only one jurisdictional officer, either state or center. So for our case, we should know this detail when we are dealing with the notices. This know your case. What is the stage of dispute? Many times I get a call, sir, हमें notice आई है, हमें intimation आया, हमें order आया है. One fellow called me, he said, sir, मुझे order आई है और appeal में जाना है. When I checked, it was just an intimation, not a notice, not an order. So we are not sure about what is the stage of our dispute. Whether it's just a note letter, whether it's just an intimation, whether it is just an order or appeal. The matter of dispute. What is the matter of dispute? This just I'm giving the pointers. आप जब भी आप कोई भी केस के ऊपर डील करोगे, जिस पॉइंटर पे मैं काम करता हूँ, शायद आप भी रेफर कर सकते हो. Then read the notice again and again. Go into details of the issue raised. In GST, like everyone is making the mistakes. Department is also making a lot of mistakes while sending the notices. I have many instances where notices are sent incorrectly. 2 days before only I have drafted one reply where notice has an incorrect name of taxpayer. The taxpayer name was wrong on the notice. The penalty amount was wrong. The details mentioned are incorrect. So such, when you will read notice again and again by left right angle, you will get some more pointer for submission. एक केस में से हुआ था हमारे कि ऑफिसर ने एक जगह लिखा कि गाड़ी 9 बजे पकड़ी गई सुबह, एक जगह लिखा रात को 9 बजे पकड़ी गई. अरे कब पकड़ी कब गई वही क्लियर नहीं हो रहा है नोटिस में से.
So there are a number of judgment when notice is not clear that notice or order is required to be set aside. Try to find out the anomaly in the error in the notice or procedure by the authorities. कुछ उन्होंने error की है क्या? कुछ उन्होंने principal natural justice follow नहीं किया है क्या? And whatever submission you will make, either for extension or any additional submission or clarification, anything, always take an acknowledgement. Many times, taxpayer submit the information, consultant submit the information, officer refuses to give that acknowledgement. Friends, you do anything but take the acknowledgement. Otherwise, send by the registered post. We should have acknowledgement of everything, whatever submission is made in regards to notice. You can reply on the emails. There must be some proof that you are providing the information, you have provided the information, or you have submitted the information. And check whether the notice is received on the portal, email, or post. Sometimes you will receive the notice on the email, you will reply just physically. However, also make it, if that notice is on the online, submit the online reply also, so that in future you will not face any issue, any procedural problem, any portal related problem. Now, let us understand the timeline, form of reply, and other aspects. Now, ASMT 10. Normally, we have seen this notice, scrutiny notices. So, we are required to give the reply. The reply is required to be given in ASMT 11. Many times I see that consultant are replying on a normal letter. Against this ASMT 10 received, our reply is like this. But friends, there is a format for that. ASMT 11. So our reply should contain that ASMT 11. This just I am giving here for your ready reference. Now let us understand the flow of notice, order, appeal, all this procedure. Normally, nowadays we receive the first ASMT 10 about the scrutiny notices that we observed this discrepancy in this period. So this is just a normal letter, it's a normal notice. Against that, we are required to submit the reply in ASMT 10. Officer will ask you to submit within 1 week, within 10 days. If you need additional time, kindly reply in writing with the acknowledgement that, dear sir, we need to check the details and kindly give us 2 weeks more time. You can ask, it is your right. Law also provide for the extended period also. Thereafter, if officer found your case or reply properly, then he will close the matter. If not, then he will issue the intimation. The intimation in DRC 01A, intimation of tax payable. Now this intimation is misunderstood as a show cause notice. It is not the show cause notice. It is just an intimation. One more step before show cause notice. So intimation of tax payable in DRC 01A, which normally officers issues after ASMT 10. For that we will for DRC 01A, this is not a show cause notice. It's not a show cause. It's just an intimation of tax payable for which we need to reply in the part B of DRC 01A. If, as per our reply, if officer is not satisfied, then he will issue the show cause notice, the very important, which is the first stage considered as a litigation. So show cause notice is issued after DRC 01A normally. Friends, now here we have discussed ASMT 10, DRC 01A, and now show cause notice. Now the form for the show cause notice is DRC 01. Now, whether it is ASMT 10 or DRC 01A or DRC 01, we should get a detailed notice. The online notice which we download from the portal is just a summary. There should be an explanation about what is the scenario, what is the discrepancy, what are the legal provision, what is the non-compliance, what is the department contention, and what is the show cause they are asking from us. So all these parameters should be there. Some of the cases I observed that department just send a notice,
para 76, 2 lakhs, para 75, 15 lakhs. No any other explanation is given. This notice is not proper. There are n number of judgment which are going to refer in our coming slides. I could have struck down such notices. So the show cause notice here, actually the show cause notice comes into picture, but I have seen that many time professional, even after receipt of A7010 or even after receipt of DS01A, they says that we have issued the show cause SCN, we have received the SCN. This is not the SCN. SCN is DRC01. For almost all the notices, we will get the notice in the two part or two types. One is a detailed notice in this form and one is a summarized form. If you have received the summarized notice, it is not valid. You can reply to the authority that, dear sir, we are not able to understand what is your contention. You are requested to please give a detailed show cause notice or detailed intimation. So again, for show cause notice, we are required to submit the reply in DRC06. Here also many times mistake is happening that on the plain letter reply is submitted. No, we are required to submit the reply in DRC06. The format, the procedure we need to follow. If our reply to show cause notice is okay, if you have paid the payment of liability, the officer will close the matter and he will issue the drop proceeding order in DRC05. This flow we should be aware. Therefore, I'm just in this diagram, through diagram, I'm trying to explain. If liability is not paid, then based on our reply, the officer will issue the order DRC07. So this is the order. DRC07 is order. Against this order, we have a remedy to file appeal. In appeal, we will discuss all the provision, but that appeal is required to be filed in APL 01, for which we get the acknowledgement in APL 02. Any question till what we discussed about the flow? Friends, any question about this notice formats which I am discussing? Please try to make interactive session. In India, only one person can talk and on one side for n number of hours, but it is difficult for me. So I request you, if you have any questions, you can ask it immediately in the chat box. So it is related to the audit, which is not our today's topic. Now, the mode in which department can send the notices or order someone. So earlier we were having a habit of receiving a notices by post only, but in GST the problem is that we are receiving notices by email, we are receiving by post, we are receiving on the common portal also. And because of this, some taxpayers, some professionals are missing some notices, some orders, and then after, when there is an attachment, we come to know, अरे यार ऐसा कुछ notice आया है क्या? कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, अभी तो भी ये law में already provided है. There is a provision in law, and law has given authority that department can send a notice by any or by these 6 methods. अभी तो वो 2-3 ही method use कर रहे हैं, that either giving directly by post or email or common portal. There's another 2 more options, that newspaper and also affixing on the registered premises or affixing the departmental notice board also. So this is a issue, but as of now there is no solution. This is an administrative convenience. Department is finding that पहले नोटिस भेजने के लिए काफी दिक्कत होती थी, पोस्ट रिटर्न आता था, अभी तो ईमेल आईडी है उनके पास, पोर्टल है तो वहां पे अपलोड करते. And there is also not one simple straight jacket formula adopted. Some officers they send on the email, some upload on the portal. There is a requirement that should follow the same procedure. Now, one important scenario I request or I recommend to all the practicing CSGO here, that you can maintain one Excel checklist or Excel monitoring list where you can monitor that
आपके किस क्लाइंट को नोटिस आई है, उसका क्या स्टेटस है, रिप्लाई सबमिट हुआ है नहीं हुआ है. See, we are receiving like there are number of notices been received. It may happen that you will forget to reply or your client will forget to revert you कि क्या करना है, टैक्स भरना है, अपील में जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह. So please maintain one sheet in which details of what is the date of notice, what is the matter, what is the last date to reply, whether reply submitted, what is the next line of action. Else you will see that कि आपने नोटिस के ऊपर तो काम किया था, आपने ऑर्डर के ऊपर डिस्कशन भी किया था क्लाइंट के साथ. क्लाइंट ने बोला चलो देखते हैं अपन क्या करना है, झगड़ना है क्या नहीं करना है, अपील में जाना है नहीं जाना है. But then after 2, 3, 5, 7, 8 months there will no discussion and suddenly after when there will be attachment he will come to you, sir वो नोटिस आई कि उसका क्या करना है. अभी तो कुछ नहीं कर सकते, the time limit is over. So you can maintain the tracking sheet, or also you can ask your big clients to maintain. If they are having a number of registrations, I have seen some of our clients, they maintain this tracking sheet. Now we'll discuss the show cause notice section 73, 74. There's a very good statement by Henry Ward Beecher. He is a very good known legal academician and social reformer. A law is valuable not because it is law, but because there is a right. And many times we are not aware of our right कि हमारा क्या अधिकार है, हम क्या कर सकते हैं. नॉर्मली ऑफिसर आपको थ्रेटन करता है कि हम अटैचमेंट कर देंगे, हम पेनल्टी लगा देंगे 100%. क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? Let us discuss that. So normally all the demand and recovery actions are been taken under section 73 and 74. So what is the section 73? For 73 under section 73, notice can be issued for an unintentional mistakes or unintentional case where the tax is not paid, short paid, erroneously refund is taken. So there is no fraudulent intention. In such a case, action will be taken under section 73. I hope you understood this. Now, in 73, what is the maximum time up to which department can send us a notice? It is a 33 months from the due date of annual return. Friends, please remember this. Many times we are not aware कि ऑफिसर को कितने समय तक उसको नोटिस भेजने का अधिकार है. So he can send a notice under section 73 maximum up to 33 months from the due date of annual return. And he is required to pass the order within the 3 years from the due date of again annual return. So 36 months and 3 years time is given. Now only for the purpose of section for the year 17-18, due to COVID, the Supreme Court has given extension for all the type of adjudication proceedings, even for filing appeals also they have extended time limit. So due to which the time limit for the issuing the notice also got extended, and it is now it is extended up to 30th September 2023. So you will see that I think this is September is a period of our tax audit and all those books finalization. But you will see that in the September there will be a rain of the notices because time limit of section 70 is getting over for the 17-18. So whatever pendency will be there, department will definitely issue more notices. After that, they do not have a right to issue notice under section 73. So in case of unintentional mistake, for the financial year 17-18, department cannot issue any notice after 30th September. Even if they issue the notice on the 1st October, it is not valid. Now section 74. Then section 74 deals with the where tax is not paid, short paid, erroneously refunded by reason of fraud, willful misstatement, suppression of facts. So अगर आपको notice आती है, it is because of the liability is not paid and it is intentionally it is not paid, then officer will initiate the action under 74. Friends, in today's scenario, I have seen many instances that officer are also not aware कि हमें section 73 invoke करना है, 74 invoke करना है. Today only I deal the case where
action is initiated under 74, but penalty is levied as per section 73. This is totally incorrect. So 74 कब डिपार्टमेंट उसको उसके तहत कार्रवाई कर सकता है जब वो इंटेंशनल मिस्टेक हो, इंटेंशनल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो या सप्रेशन ऑफ फैक्ट हो. Here department get the extended period to take the action. So what is that extended period? That notice can be sent within 54 months from the due date of annual return. So under section 74, department can send the notice within 54 months. Friend, this timeline we should remember. This is our right. You know, those are law practitioners. Many times the big amount of notices, करोड़ के नोटिस होते हैं, वो सिर्फ इसी छोटे मोटे पॉइंट के ऊपर ही they get the favorable order from the high courts and the high court set back that orders, set aside the order because it is not within the time limit. The principle of national justice is not followed. So we should also remember this. GST में बहुत सारे ड्यू डेट हमें याद रखने पड़ते हैं, बट ये जो नोटिसेस रिलेटेड टाइमलाइन है हमें याद रखना बहुत जरूरी है. So अगर if action is under 74, again, if department wants to invoke 74, then they will have to explain why this is a fraudulent activity, why this is a willful misstatement, why this is not a ignorance, why this is not a unintentional activity. They have to explain in the order. Sorry, they have to explain the notice. They cannot just take an action under 74. Ki this amount is not paid and this is willful misstatement. They cannot do that. They have to explain what is making them to take the action under section 74. Else you can fight on the ground that notice is issued under in the incorrect provision or incorrect section. So here department gets the additional 2 years than the section 73. So section 73 and 74, the difference is that in 74 department gets more time to take the action. And another difference is that the penalty consequences under 74 are higher. In 73, it is very minimum. So because of the two reasons, we should know that our case is falling as per us under 73 or 74. Forget about what department is saying. Normally, department will in future, they are going to take the help of 74 only because they are getting the more time limit. But they have to explain, they have to justify कि क्या ऐसा गुनाह हुआ है, कि क्या ऐसा जो लायबिलिटी पे नहीं हुई है, why? What is the reason which officer is feeling that it is a willful act? They have to mention in the notice. Now this is the penalty chart which we should, हमें इसको भूलना ही नहीं है. मरनान भूल के तो भी चलेगा, but we should not forget this penalty कब आती है, because I see many times officer will straight away tell you कि ये नोटिस भेज रहा है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो 100% पेनल्टी लगेगी आपको. We are not aware of our right. So in section 73, for section 73 notice and section 74 notice, first I will discuss about 73. अगर आपको नोटिस आई है 73 के अंदर या आने वाली है या ऑफिसर कार्रवाई कर रहा है, if you voluntarily make the payment of tax, there is zero penalty. Or if you make the tax amount and interest within 30 days of issue of notice, again there is a nil penalty. मान लो आपको नोटिस आती है जिसमें ऑफिसर लिख रहा है कि अंडर सेक्शन 73 why we should not collect the recover tax from you. He has also mentioned the penalty, interest, everything. And if you accept that, you just have to make the payment of tax and interest. No requirement to make the penalty if you are making the payment within 30 days of notice. So 73 के अंदर हमें राइट है कि हम जो लायबिलिटी, जो एरर हुआ है, जो मान लो कुछ ऐसा सेल था जिसके ऊपर टैक्स प्रॉपर्ली पे नहीं हुआ या गलत हुआ है या गलत क्रेडिट लिया है, which we are accepting गलती से हुआ है, डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है हो सकता है, तो अगर आप वो अमाउंट वॉलंटरली करते हो when officer has observed it or before issuance of notice or within 30 days of issue of notice, there is zero penalty.
But if it is after that, assuming officer notice issue कर दिया आपको, 30 दिन हो गए, फिर आपने उसका रिप्लाई सबमिट किया, उसका ऑर्डर होगी, maximum 10% penalty can be levied. Maximum 10% penalty if it is a case of 73. Officer cannot go for 100% penalty in section 73. Section 73 is genuine mistakes, genuine errors which can happen from anyone and is happening because GST is a very unstable law. Everyone, I think there will not be a single taxpayer in India out of 1,30,000 or 40,000 crore, 1.3 lakh 3 crore taxpayer who has not done any mistake in GST. Everyone is doing some smaller or bigger mistake. So if the action is under 73 and if the payment is made of admitted liability and that too before within 30 days of issue of notice, there is zero penalty. Friends, please remember this. Now, what about the action is under 74? I have seen hardly a cases where the action is under 74. Department is also not taking the action under 74 in a genuine cases. उनको भी मालूम है कि जीएसटी नया था, बहुत मिस्टेक्स हुए हैं, कुछ इंटेंशनली नहीं है. नॉर्मली जो मिसमैच के जो केसेस हो रहे हैं वो सब कुछ 73 में है. इट इज नॉट एनी इंटेंशनल. All the ITC mismatch, supplier has not paid, all the actions should fall under 73. There is no fraudulent intention. हम बिजनेस कर रहे हैं, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है. सप्लायर टैक्स नहीं पे कर रहा है, उसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है. We are going to discuss on that how to handle that notices. But for such notices, officer cannot take the action under 74 and also he cannot levy you the penalty more than the 10%. Friends, please remember this. कभी कभी ओरली आपको बोल देते नहीं तो आपको 100% पेनल्टी लगेगी. अभी अमाउंट मैंने जो नोटिस भेजी है अमाउंट मान लो 20 लाख की है, अगर आप नहीं पेमेंट करोगे तो उसके ऊपर 20 लाख की पेनल्टी आएगी. ऐसा नहीं हो सकता है. So if action is under 74 and if you are admitted, okay, ये हुआ था हमारी तरफ से, so 15% only maximum penalty if it is before notice. If it is within 30 days of notice, maximum 25%. If you are admitting and paying it before 30 days of within 30 days of order, then 50%. So आपको ऑर्डर आई है DRC 07 में और आप 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हो जो कि सेक्शन 74 के ऑर्डर है, तो मैक्सिमम 50% पेनल्टी. एंड if you don't make the payment within 30 days of order, then 100% penalty. So any question with respect to this penalty calculation of the section 73, 74? So Ashish is asking if we are not corrected in annual return. We are not corrected in annual return, and under departmental audit they used to invoke 74 only. Yes, it can happen that we have not taken the correct step in annual return. Again, that annual return form is again problematic form. This annual return form, friends, I feel that in future government has to replace it. This form is not giving the correct picture. It's just asking you the liability. There is no correct representation of the information. Even I'm sure that I think here 200 plus or professional are here. Everyone is filling this form at least 5 to 10% in a different manner. कहाँ पे क्या disclose करना है. So this problem and department is also finding this difficult. If you meet the state officer, उनको तो form बहुत difficult होता है समझने के लिए. So in future we'll definitely have a different form. So on the basic tax only or interest. So penalty will be on the tax plus interest or only on tax. So penalty will be only on the tax, not on including interest. So whether mismatch of ITC 2A will 73 or 74, as I explained, mismatch of ITC, again we'll have to go into fact. It is a normal case where supplier has not made the tax payment. So here there is no question of intentionally not following the law. So definitely 73. But if you have purposely taken some taxpayer has taken September की last due date, ले लो ज़्यादा extra credit, ले लो 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख. So in such case, section 74 may trigger.
So how to respond to their queries, by email or by portal? Friends, if you have received the notice on email, assuming first is only in the email and portal, I will recommend you submit on the email also, you submit on the portal also, and submit physically also. Why so? I have seen the cases in assembly time. You will many times you will observe this. आपने reply submit किया है, but officer ने देखा ही नहीं उसको, उसने वापस दूसरी notice भेज दी, same point, without considering our reply. Why? उसको मालूम ही नहीं कि हमने reply submit किया है. ये और एक प्रॉब्लम है जी, इसमें इतने सारे नोटिसेस इशू हो गए, इतने सारे नोटिसेस हो रहे, दे ऑफिसर आल्सो ओवर ऑक्यूपाइड, they are also missing our replies. So better physically भी एक सबमिट करके जाए, उसके पास एक एटलीस्ट लेटर कॉपी में कुछ रहेगा उसके टेबल पे, तो एटलीस्ट उसका वो will take a cognizance of the reply, and then he will move ahead with the further another steps if you want to still go ahead with the next steps, DRC 01 or 1. So I recommend that आपको पोर्टल पे आई तो पोर्टल पे तो रिप्लाई जरूर करिए. Why? Because in future notices or order वहां पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए. ईमेल पे आया तो ईमेल पे भी उसका रिप्लाई सबमिट करना है, एंड फिजिकली तो देना ही देना है, बिकॉज ऑफिसर विल हैव समथिंग रेडी, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट टू रेफर, टू स्टडी, एंड देन ही कैन टेक द एक्शन. Penalty can be levied on the late filing of return along with late fees. Saurabh, your query is that penalty can be laid on late filing. So your query is that late payment of taxes. So here, just refer the note which I have mentioned here. Penalty at 10% shall be paid. It is mentioned in the law that अगर आपने tax payment नहीं किया within 30 days, तो हम आपको 10% penalty लगाएंगे. ऐसा section 73 9 या 10 में दिया हुआ है कि अगर आपने टैक्स पेमेंट विद इन 30 डेज नहीं किया, सो डिपार्टमेंट कैन recover the 10% penalty. However, there is a circular. I have referred that circular in my next slide. This circular is saying कि वो तो ठीक है, हमने लिखा है एक्ट में, बट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे. हमने आपसे लेट फी तो ली है, तो वापस पेनल्टी नहीं लगाएंगे इस केस में. और अगर ज्यादा से ज्यादा इच्छा होती है किसी ऑफिसर की, तो वो जनरल पेनल्टी लगाए अंडर सेक्शन 126 और 125 of rupees 25,000. So the penalty will not be levied of 10% in case of late payment of taxes in general. So friends, जो भी हमने अभी डिस्कस किया about the forms, about the form of reply, and what are the next stage, whether it is a letter, whether it is a notice, whether it is intimation, whether it is order, we should be very much clear about the stages. और हमने डिस्कस करते हुए क्लाइंट को भी बताते वक्त उनको ठीक से बताना जरूरी, नहीं तो हर एक लेटर को नोटिस समझा जाता है और हर एक लेटर को शो को नोटिस समझा जाता है, या फिर उसको ऑर्डर समझा जाता है, which is not so. Now some general provisions which are given under section 75. Every notice, before taking any action, further action, the department in the show cause notice also, department is required to give an opportunity of hearing, personal hearing, कि आप बताइए आपका क्या कहना है. अगर डिपार्टमेंट एडवर्स एक्शन लेने वाला है, assuming there is a demand of 5 crores, again maybe a mismatch or any other reason, ineligible ITC or anything, you have submitted a detailed reply, an officer is not agreeing to your reply, he has to give you a personal hearing whether you asked or not. He has to give. It is provided in section 75 that whenever officer is thinking to pass any adverse order, he has to give a opportunity of being heard. Friends, there is a recent judgment, I have mentioned it over here, just 8-10 दिन पहले का judgment है, Mode Agencies versus State of UP. Here, what has happened that आपको जब नोटिस आती है, आप जब रिप्लाई उसका सबमिट करते हैं ऑनलाइन, तब वहां पे टैक्स पेयर ने अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग पे टिक नहीं किया था, भूल गया था, एंड रिप्लाई सबमिट कर दिया, डिपार्टमेंट ने बिना पर्सनल हियरिंग ही ऑर्डर पास कर दी. Then this taxpayer went into the High Court, filed a petition that the rule of national justice is not followed, and based on this, High Court has set aside this order. I'm just reading it over here.
that providing the opportunity of hearing would ensure that observation of rule of natural justice, allow the respondent to pass the appropriate reason order in order to serve the interest of justice and allow the better appreciation to raise the appeal stage, and therefore remitted the matter back to the revenue department. जब ऐसा कुछ होता है ना, जब this is like called as slap by the courts, department take it very seriously. जो भी ऑफिसर से कार्रवाई करता है उसके ऊपर अगेन इंटरनल एक्शन करती है कि तूने क्यों किया, अननेसेसरी डिपार्टमेंट का भी टाइम, कॉस्ट, एनर्जी, मनी वेस्ट हो गया. सो डोंट पास सच ऑर्डर. आई थिंक कर्नाटक कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, तमिलनाडु टैक्स डिपार्टमेंट has issued very fantastic detailed guideline about issuing the notices order, which you can also go through that, and you can refer in your replies also that आप जो भी कार्रवाई करोगे, आपको जब पावर दी गई है तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना जरूरी. you cannot just threat the taxpayer. Friend, we should be very much confident while dealing the cases. हमें ऑफिसर से डरना नहीं है. From one of the very respected senior professional, I learned one thing, that we should not be fearful to the authority, we should be respectful to the authority. So अगर ऑफिसर ने आपको ठीक से समय नहीं दिया, आपकी केस सुन नहीं रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं, डियर सर, you have to listen what I am saying. You cannot straight away pass the order. So opportunity of being heard, there are number of judgments already in GST also. Just I am referring over here one of the fresh judgment. 8-10 दिन पुराना ही है, ताजा. Adjournment of hearing. We can claim the adjournment of hearing. Normally officer deny करते कि हम hearing नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है. They have to give the hearing adjournment. So in law, it is provided that we can take maximum 3 times of an adjournment. But in my view, we can claim more if there is a genuine reason. The officer is required to pass the speaking order. Many times, the order passed without explaining what is the discrepancy or what is the non-compliance. Such order are not valid order. On this ground only, such order are required to be set aside. Such order required to be quashed. I will refer some decisions also in next slide. But friends, please remember, अगर आपको order आती है कि आपका ITC mismatch है, बस कुछ explain नहीं किया है, या आपने ITC लिया जो गलत है, क्यों गलत है, explain नहीं किया है, या आपने टैक्स जो पे किया है 12% से पे किया बट 18% से करना चाहिए था, explain नहीं किया है, such orders are not valid orders. Such orders are required to be set aside. There are a number of judgments where courts has warned the authority. Even recently, तो मेरे हिसाब से 2-3 high courts in the country, they have mentioned that tax department should train their officers about how to proceed with adjudication, notices, show cause notice, passing the orders. The order should not overtake the notice. It is mentioned in GST Act that show cause notice में जितना लिखा है, इसके आगे order में कुछ नहीं हो सकता है. There cannot be a different, any more non-compliance or discrepancy in the order. There cannot be. If it is so, it is not valid. This judgments are referred in GST also by department only in their various instructions. That is a very landmark judgment by Supreme Court in case of Sri Swamiji of Sri Amdar and others, where it mentioned that the reason is the soul of the law, and when the reason of any particular law ceases, so does the law itself. It means reason is must. Recently, Bombay High Court also in Archana Textile Corporation has set aside the show cause notice, an order for lapse of not providing all the details, all the ingredients. Friends, why am I discussing this? I see there is a lack of confidence when as a professional we deals with the notices or orders or appeals as compared with the law professionals. We charter needs to upgrade ourselves, need to upgrade our knowledge, because in GST, I feel that in coming 4-5 years are just going to be an era of notices. N number of notices, because department has a huge data. मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डेटा बैंक होगा डिपार्टमेंट के पास,
और वो कंपेयर करते इधर का उधर, ई-वे बिल का ई-इनवॉइस के साथ, इसके साथ, उसके साथ, और आपको नोटिस आएगी। अभी तो वो फॉर्म 26 एएस वगैरह वो तो बाकी है, जो सर्विस टैक्स में हमें आज मिल रहे थे वो तो जीएसटी में और आगे आना बाकी है, वो भी होगा आगे जाके। So therefore, it is very important that we professionals should be aware about all these procedures. And अगर आपके केस में कहीं पे प्रिंसिपल नेचुरल जैसे फॉलो नहीं हो रहा है, एक बार ऑफिसर ने आपके इश्यूज को समझा नहीं है, then you can simply in a very little harsh word or politely harsh word you can reply that, dear sir, the notice is not valid. Recently in case of one of the e-way bill notice, yes, 2 days before only I was dealing with that notice, officer just mentioned proper document is not provided. What is not a proper document? Which document you find the improper? Officer is required to mention it. So in our submission we have mentioned that in the notice only it is mentioned that proper document is not provided. What was not correct in the document, it is not mentioned in the notice or order, and based on that only we are requested to set aside this order. Now as I mentioned in our initial discussion that वो जो आपको ऑनलाइन पोर्टल दिखता है एक समरी फॉर्म में होता है, जो ठीक से समझ में नहीं आता है, उसमें लिखा होगा आपका नाम, आप जीएसटी नंबर वगैरह, 2-3 लाइन लिखे होंगे, टेबल आएगा, इतना आपको पैसा भरना है। That is not the friend show cause notice. Even though it is mentioned at DRC 01, it is not show cause notice. A detailed notice is must. You should ask the officer, provide us a detailed show cause notice कि क्या हमारी तरफ से गलती हुई है। Now we were discussing about DRC 01A intimation. Which is commonly or normally generally called as pre-consultation. मतलब डिपार्टमेंट कुछ कार्रवाई करने से पहले आपसे प्री कंसल्ट करता है कि हमें शो कॉज नोटिस चक्कर में नहीं पड़ना है, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं DRC 01A के अंदर कि आप आइए, और अगर आपको एक्सेप्ट तो आप इसके अगेंस्ट रिप्लाई सबमिट करिए, नहीं है जो भी कुछ है, सो दैट वी कैन क्लोज द इश्यू। दिस प्री कंसल्टेशन वाज मैंडेटरी अप टू अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 के पहले डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस इश्यू करने के पहले ये DRC 01A प्री कंसल्टेशन जरूरी था, बट नाउ इट इज ऑप्शनल। There are recent few judgments of the High Court where High Court has struck down the show cause notice as show cause or order because it was not followed properly. उसमें प्री कंसल्टेशन नहीं हुआ था। Now let us understand the appeal. So Vivek sir is saying that unfortunately there is no mechanism to enforce the compliance from GST officer. There is hardly any accountability for the officer. Partly Vivek sir, you are right, but again we need to again explain the officer also this procedure need to follow. I have a limited knowledge of the VAT, but as far as I know that in earlier VAT laws only assessment were happening, no show cause notice was happening. So officer not aware properly about issuing the show cause notices. We need to tell them that sir you cannot do that. There are number of judgments हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले। एक बार तो मैं केस के लिए गया था डिपार्टमेंट में और मेरे टैक्स पेयर का कुछ 2-4 दिन डिले हुआ था। आई एम नॉट ऑडिबल फ्रेंड्स, am I audible? Audible. Yes, okay. So friends, कुछ इश्यूज के लिए गया था, कुछ नोटिस का वगैरह हियरिंग था, और जो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के कमीशन के बाहर जो आदमी बैठता है ऑफिसर, he asked the client person that आपका पेमेंट नहीं हुआ है, रिटर्न नहीं फाइल हुआ है, 10 दिन हो गए, I will attach your bank account. क्लाइंट टेंशन में आ गया, सर आपने ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है, ये बैंक अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। I immediately replied, officer, sir, you cannot just take the action of bank attachment. This is a Draculian provision. You should go for the bank attachment only when you have a strong reason that there is a threat to the department revenue. There is a judgment of High Court.
please refer the judgment and then think of initiating an action, sir. Politely, we should tell them that. उसके बाद अभी तक क्लाइंट को ऑफिस कभी उसने बैंक अटैचमेंट का फोन नहीं किया है. हम बताते ही नहीं ऑफिसर को ना ऐसा कुछ होता है. हमें बैंक अटैचमेंट का और ऑफिसर हम टेंशन में, क्लाइंट टेंशन में, ऐसा नहीं होता है. Because we are not aware about our right, therefore we are accepting what they are saying. So, Vivek sir, what you said 50% is right, but once we are aware of our right, we will tell them that ऐसा नहीं कर सकते sir आप. Friends, if you see the center officer, central tax officer, they will hardly take the harsh actions. But when it comes to state, they immediately take the harsh action. नहीं रिटर्न भर दिया, बैंक अटैच कर दो. नहीं रिटर्न भर दिया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो. ये रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का फीचर स्टेट लॉ से आया हुआ है. ये सेंटर में पहले कभी नहीं था. Even friends, about registration cancellation, the way the actions are being taken, and we are getting a good judgment of high courts, and because of that only, the recently government has announced that they are coming with the amnesty for all the past registration cancellation cases where the time limit, within the time limit, it is not revoked or appeal is not filed. Why department has accepted it? Why GST Council has accepted for amnesty for it? Because there are many high court judgment which is saying that the right to do the business under Article 19 of Constitution of India is getting hampered. Right to life is getting hampered. मैं business नहीं करूँगा तो कैसे जीऊँगा? और आप मेरा registration cancel कर रहे हो और मुझे कोई option नहीं मेरे पास, ना ही appeal कर सकता हूँ, ना ही revoke कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ. So ऐसे सब केसेस में हमें भी हमारा राइट मालूम होना जरूरी है. हम क्या कर सकते हैं, क्या टाइम लिमिट है, क्या पेनल्टी है, क्या ऑफिसर को करना चाहिए, क्या उसने डिटेल में देना चाहिए. अगर वो नहीं करना तो हमें उसको बताना जरूरी है. और स्लोली अगर हम बताना सब लोग शुरू करेंगे, so they will also learn all such things, and फिर आने वाले दिनों में they will become little literate. So even though it is not our duty, but we have to do it. No option. So attachment provision we will discuss in the coming slide. Appeal के बारे में the time limit is within 3 months from the date of receipt of the order. So appeal हमें file करनी है within 3 months in GST. And maximum or the condonation is given for 1 month only. This is very less time given in the law, but as of now there is no option. So maximum time we have 4 months, 3 months, and one additional delay condonation of 1 month. So within 4 months we need to file the appeal. Friends, I mentioned about tracking sheet. I am seeing number of cases जहाँ पे कोई order आती है, उसके ऊपर consultant taxpayer सोचता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, चलो देखते हैं एक्शन लेना है, नहीं लेना है, चलो फाइट करते हैं, थोड़ा सोचते हैं वगैरह वगैरह. और फिर उसके बाद हम प्रोफेशनल भी बिजी हो जाते हैं, टैक्स पर भी बिजी हो जाता है. एंड देन ही will realize after 8-9 months, अरे यार ये ऑर्डर आई थी. Friends, do maintain this tracking sheet. We need to send a gentle reminder to client, sir, 2 months are over. If you want to litigate it further, please let us know, because we will also need a time to draft the reply, grounds of our submission, because it required intellectual study, 2-3 weeks minimum required. So please confirm about action to be taken. ऑफिसर आएगा आपको जब उसके ऑलमोस्ट 90 डेज में से 89 डेज खत्म हो जाएंगे और बोलो ऑर्डर फाइल करो. कैसे करें? एक दिन में कैसे करेंगे? Now pre-deposit. Now the pre-deposit in GST, we are required to pay the pre-deposit of 10% of admitted liability. Sorry, 10% of order tax liability, tax demand. 10% of tax demand. Here 10% we are required to submit, pay. So my question to all of you is that whether I can pay the pre-deposit by cash or whether I can from the credit ledger a pre-deposit amount. Cash से तो कर सकते हैं pre-deposit. Can I make the pre-deposit from the credit ledger? So there are many judgments, high court judgments, but in my opinion, no. So Judgment said you can make it. Many of you are saying yes, no, yes, no. So friends, my opinion on is that since this is appeal matter, right? If
there is a cash available with your client, better to pay it in the cash. अदरवाइज हमारा अपील रहेगा बाजू में और अपील रिजेक्ट होगा जस्ट ऑन द ग्राउंड कि आपने इसका प्री डिपॉजिट प्रॉपर्ली नहीं किया है. So because law is not clear on this aspect, in one or two occasions directly indirectly they have mentioned कि आप क्रेडिट से कर सकते हो. Again, as Rajesh sir said that there are high court judgment which saying कि आप क्रेडिट से कर सकते हो, एक जगह क्रेडिट से नहीं करते हो, ऐसा भी एक हाई कोर्ट ने बोला है. So if you want to go safe, better make the payment by cash ledger only. But there is a cash crunch. I think it is our right because it is a liability only. We can make the credit also. But while doing that, kindly inform to the client कि सर ऐसा तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लॉ में कुछ क्लियर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं बट आपके क्रेडिट लेजर में पैसे पड़े हुए, सो हम क्रेडिट लेजर यूज करते हैं. बट डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, आज की तारीख में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं. So if you are thinking to make the payment of pre-deposit by credit ledger, kindly take your client into confidence because department may not accept this as it is. I hope you understood this. Now 10% is of the tax amount, not the tax interest penalty, only tax amount. And once you make the tax pre-deposit, you submit the appeal, then there is a deemed stay. There is no another action for the stay proceeding is required. When we submit the appeal, it is a deemed stay. So one participant said credit adjustment is not allowed in system. As I understand from few professionals that portal do allow the credit ledger also for pre-deposit. I'm not sure, but portal do allow. I don't know. Not passing the order even after 2 years of filing of appeal. So Ashish is saying that what we should do, appellate authorities are not passing order even after 2 years of filing of appeal. We should meet the higher authority. They are overburdened. They might have missed your appeal. So you follow up, you meet the higher authority. Or if the case is very urgent, you can think of approaching the high court, but there should be a solid ground for approaching the high court that there is a huge delay and it is impacting my business, it is impacting my working capital, it is impacting my whether I will sustain. In such case only we can think of going in high court. Friends, normally many times the professionals or when we discuss in the seminar that हम high court में जाएंगे हर एक केस के लिए. So now initially high court used to accept the even normal notices. They used to deal with that notices. They used to give their decision also. But nowadays high court is giving us replies that if you have appeal remedy, don't come to us directly. They are also overburdened. So we should have a strategy before going to the high court. Recently in the Bombay High Court, even registration related cancellation case was rejected by the High Court. High Court said that you have to follow the time limit. You cannot just ignore the time limit. I feel that matter was not represented properly. In registration cancellation case, even though now it is not a problem so because the government is coming with the amnesty, but just I'm telling you my thought process. What is happening in registration cancellation cases, which you can refer in future other type of notices? You will receive the order that registration is cancelled. It is on the portal somewhere. You are not aware. और जब आपका 4-5 महीने 5-6-7-8 महीने चले जाते हैं, आपको मालूम पड़ता है कि यार ये ऑर्डर पास हुई है, अभी मैं अपील भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता हूँ और मेरा टाइम लिमिट भी खत्म हुआ है. तो you go to high court, you say that time limit is over, but kindly ask the authority to activate my registration, etc., etc. Here we should not discuss about the time limit. Why? We should submit that yesterday only I am aware, yesterday only I got the order. Department is required to serve me the order. मेरे पास आनी चाहिए, मैंने पढ़नी चाहिए, जैसे पहले होता था. पोस्ट मुझे मिलता था, यहाँ पे नोटिस मेरे पोर्टल पे आती है, मुझे देखने के लिए वो सर्विसेज में अंदर जाना पड़ता है देखने के लिए. Sometimes notice I can receive in the spam folder. It can happen. So we should
In such a cases, what we should do, we should file the appeal saying that my registration is cancelled on so date by this order, and I come to know about it yesterday or 2-3 days before. Therefore, I am filing this appeal because it is within well time limit. Authorities will say, no, it is not within the well time limit. They will reject your appeal. Then you can go to the High Court saying that the principle of national justice is not followed. I have filed appeal within the time limit. 2 दिन पहले मालूम पड़ा था मुझे, मेरा कैंसिल हुआ है वगैरह वगैरह ऑर्डर मुझे मिला था, समझ में आया था. In such case, High Court will definitely entertain your case. So we should have a proper mechanism, proper strategy before going to the any first appellate, second appellate, or might be High Court. Now, friend, this changes in the appeal procedure. I am fortunate enough and confident to say that this changes recently. I have made important contribution for this, for bringing this change. There was a provision in GST law that while submitting the appeal, we are required to submit the appeal along with the certified copy of the order. So मुझे जब अपील सबमिट करना है तब मुझे ऑर्डर का सर्टिफाइड कॉपी उसके साथ लगाना पड़ता है, सर्टिफाइड, एंड द व्यू इज टेकन दैट सर्टिफाइड बाय द ऑफिसर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. अगर मैं नहीं करता हूं तो मेरे अपील एक्सेप्ट नहीं करते थे अथॉरिटीज, एंड देन वो टाइम बार हो जाती थी. सो 2-3 हाई कोर्ट में ये मैटर पहुंचा जहां पे अपील रिजेक्ट हुई बिकॉज सर्टिफाइड कॉपी सबमिट नहीं की थी. एंड हाई कोर्ट सेड नहीं तो ठीक है, थोड़ा सा प्रोसीजर लैप है, आप इसको कंसीडर करिए. I feel that this is, when I observed this issue in the August 2022, I represented it through our Maharashtra Taxpayer Association, Maharashtra MTPA, that this provision in GST law is not correct. In earlier era, when everything was manual, that time it might be okay, but in GST it is not so. Everything is online. Why the certified copy of order is required? And I followed up the issue with the GST Council and the Law Committee and other officials in the CBIC. And on the, I think, 18th December, they have made the changes in the appeal rules. So, अगर हम कोई issues के बारे में डिपार्टमेंट को हम प्रॉपरली गवर्नमेंट को GST काउंसिल को अप्रोच करते हैं, उनको बताते हैं कि सर ये इशू हुआ है, आई थिंक 7 और 8 ये चेंजेस में GST लॉ में लाया है, जहां पे हमने प्रॉपरली हमारा भी इशू समझना चाहिए, डिपार्टमेंट का भी इशू समझना चाहिए. वो ऑर्डर सर्टिफाइड क्यों मांगते हैं? बिकॉज एजुकेटिंग अथॉरिटी एक जगह बैठती थी, ऑफिस अलग जगह होता था, तो जस्ट तो वैलिडिटी की ऑर्डर सही हो. ये पहले के प्रोसीजर ठीक था, जीएसटी में कॉपी पेस्ट हो गया, जरूरी नहीं है अभी जीएसटी में सब कुछ ऑनलाइन है, एप्लीकेशन अथॉरिटी भी देख सकती है. And on this ground, if taxpayer is required to High Court, this is not correct, which I represented, and I explained the council that you can just simply say that if the order is online, there is no requirement to submit the certified copy. Exactly the same wording they have introduced in the GST law now rules. So what they are saying that हम जब अपील करते हैं तब हमें सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत नहीं है ऑर्डर की, अगर ऑर्डर ऑनलाइन अपलोडेड है तो. Friends, if the order is uploaded on the portal, but if order is not uploaded on the portal, it might be a physical order or might be email order, then in such a case, while filing the appeal, you are required to submit the certified copy of the order along with your appeal physically. If you don't do so, your appeal is assumed to be not accepted. Very important. बहुत बार हम प्रोफेशनल इस प्रोविजन को मिस आउट कर देते हैं. पहले तो हर एक केस में चाहिए था और वो भी इसमें एम्बिग्यूटी थी, सर्टिफाइड बाय ऑफिसर और टैक्स पेयर. नाउ दे आर सेड एक तो ऑर्डर अपलोडेड है पोर्टल पे तो कोई जरूरत ही नहीं है देने की आपको, बट अगर आप ऑर्डर आपके अपलोडेड नहीं है तो आपको ये सर्टिफाइड बाय टैक्स पेयर देनी है. एंड जब आप दोगे, अगर आप 7 दिन के अंदर दोगे, तब जब आपने ऑनलाइन फाइल किया उसी दिन हम समझेंगे कि आपने फाइल की है. अदरवाइज the authority may reject your appeal on this simple ground that the procedure is not followed, and already they have rejected in 3 cases across India. Tribunal, due to limitation of time, I will not discuss. अभी ट्रिब्यूनल आना भी बाकी है, होपफुली आना चाहिए था, इस मीटिंग में अच्छा कुछ होना चाहिए था, but still pending. I hope, we wish that by end of this year that we will able to see the tribunal. Now
about the procedure which I am discussing. The two judgments, recent judgment, I would like to discuss with you. In one of the case, the authority passed the order within the 7 days of show cause notice. 7 दिन के अंदर order pass कर दी. You know, the observation made by this Bombay High Court is very important. We should read it. Just read the red line. Such order are without application of mind. बाकी क्या मैटर तो छोड़ दीजिए. हाई कोर्ट ने ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया. High Court has quashed this order. Why? Because principle of natural justice is not followed. Such order is without application of mind. The act of the officer is adding the already overburdened dockets of the court. The valuable judicial time is wasted. The officer do not seems to understand or appreciate the hardship. I think one of the friends was saying that department को नहीं समझ में आता है, तो ये समझ में नहीं आ रहा. कभी कोर्ट भी बोल रहा है कि officer do not seem to understand and appreciate the hardship. यहाँ पे फाइन भी लगा दिया ऑफिसर को. Respondent shall pay a sum of ₹10,000 as a donation to the PM Care Fund. And ये भी पता है कोर्ट ने कि Commissioner of State Tax at least hold some kind of training, orientation program to educate the officer on the prevailing law, rules, understand them the procedure of adjudication. So friends, this judgment is very important. अगर कोई ऑफिसर आपके केस में ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है तो आप उसको बताइए कि ये बॉम्बे कोर्ट बॉम्बे कोर्ट इन केस ऑफ शीतल दिलीप जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज गिवन सच काइंड ऑफ रिमार्क. आपको और ऐसे रिमार्क चाहिए क्या सर? वो भी लोग डरते हैं हाई कोर्ट से, बट हमने बताना जरूरी है कैसा भी होता है. वन मोर केस ऑफ कैंसलेशन इन बॉम्बे हाई कोर्ट. अभी मैंने आपको बताया था कि हमें नोटिस को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है. हमें जो भी नोटिस ऑर्डर आती है उसको 2-3 बार पढ़ो. सुबह एक फ्रेश मूड से देखो, शाम को देखो, बढ़िया अमाउंट है तो कुछ ना कुछ आपको अलग पॉइंट भी मिल सकते हैं. इस केस में क्या हुआ था कि ऑर्डर आई थी कैंसिलेशन की, बट उसके ऊपर ऑफिसर ने साइन ही नहीं किया था. सिर्फ नीचे लिख दिया था फॉर एग्जांपल स्वप्निल मुनोत, साइन भी नहीं किया था. और फिर टैक्स पेयर को क्या रीजन वो छोड़ देते हम लोग कि उसने क्यों अपील फाइल नहीं किया. लगभग ये मैटर हुआ था नवंबर 2019 में एंड ही कम टू नो इन द मई 2021. लगभग 2 साल के बाद इसको समझ में आया क्यों हुआ था, क्या हुआ था. दैट इज नॉट अवर टाइम फॉर अ डिस्कशन. बट द पिटिशनर argued on only one point that sir, the order was not signed, it is not a valid order, and today only authority has signed it, so therefore there is no delay in filing the appeal, or there is no delay from my side. High Court has appreciated this fact. डिपार्टमेंट ने ये भी बोला नहीं डिपार्ट ठीक है ऑर्डर साइन नहीं था पर रेस्पोंडेंट को मालूम तो था ऑर्डर पास हुई है. हाई कोर्ट बोला नहीं, unless sign is put by the authority, order will have no effect in the eyes of law. फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि नहीं ये सब कुछ हाई कोर्ट में कौन जाएगा छोटे मोटे मैटर के लिए. ठीक है, आप हमें नहीं जाना है, बट छोटे मोटे मैटर के लिए कि जब हम ऑफिसर डिस्कस करते हैं पोलाइटली हमें सब कुछ को बताना जरूरी. सर ऐसा नहीं हो सकता है, आपने जो कार्रवाई की वो गलत है और इसके ऊपर हम अगर आगे जाएंगे तो आपको भी परेशानी हो जाएगी. अगर हम ऐसा प्यार से बताएंगे तो वो भी समझ जाते नहीं 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 हमें ऐसा कुछ करना नहीं है. Now the attachment. There was some question on the attachment. Friends, attachment provisions are very harsh provision. Department cannot invoke as a routine matter जैसा. यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है डिपार्टमेंट सीबीआईसी का with respect to the bank attachment under section 83, which has given a guideline for the officer कि attachment करते हैं उनको क्या चीज का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आपके अटैचमेंट के में इस चीजों का ध्यान नहीं रखा है, you can simply ask the officer to kindly take back the action, kindly remove the attachment. First, officer need to form the opinion कि नहीं ये अटैचमेंट बहुत जरूरी है या आदमी भाग जाएगा, भगोड़ा हो जाएगा. ये जो भी व्यू होगा ऑफिसर का, he must record it in the file. He must mention it in his order. Attachment must not be a routine matter.
remedy of attachment being very by nature extraordinary has to be resorted with the utmost care and caution. These are the instruction by department friends. अगर हमें हमारे मैंने जैसे बताया था, law is not powerful because it is law, because law is powerful because there is a right in it. We are not aware about our right. We are not aware about such instructions. There is instruction. अगर ऑफिसर को नहीं मालूम है वो कोई कार्रवाई कर रहा है तो हमें बताना जरूरी, सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं नॉर्मल हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मेरा सब बिजनेस चल रहा है, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कहीं पे जा नहीं रहा हूँ, आप मेरे अटैचमेंट क्यों कर रहे हैं नेसेसरली, थोड़ा डिले हुआ है, मैंने लिख के दिया है कि मैं 2 मंथ में 15 दिन में कंप्लेंट्स कर रहा हूँ, व्हाई यू आर डूइंग दिस एक्शन. लिखा है कि अटैचमेंट शुड नॉट हैम्पर द नॉर्मल बिजनेस. नॉर्मली अटैचमेंट के केस में बिजनेस हैम्पर होता है. So it is mentioned in the instruction that attachment should not hamper the business. Friends, here there is a one recent judgment of Honorable Supreme Court. यहाँ पे बैंक अटैच हुई थी, वो टैक्स पेयर हाई कोर्ट के पास गया, हाई कोर्ट बोला हमारे पास मत है, आप अपील करिए, पहले अपील में जाइए फिर हमारे पास आइए. और टैक्स पेयर हैज went to Supreme Court. Supreme Court has made a very wonderful remark. Supreme Court has said that Honorable High Court of Himachal Pradesh has erred while rejecting this petition, and High Court has made Supreme Court has made an observation that power to order the provisional attachment is draconian in nature. Condition which are superseded by statute for valid exercise of power must be strictly fulfilled. ये करना जरूरी है. Supreme Court said that there is a clear non-application of mind by the commissioner. The commissioner is duty bound कि उसको ये सब कुछ करना है. Friends, अगर आपके कोई केस में बैंक अटैचमेंट हो रहा है, आपको लगता है कि कार्रवाई सही नहीं है, आप ये इंस्ट्रक्शन और ये जो जजमेंट में आपके, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप अगर ये दिखाओगे तो भी ऑफिसर शायद अटैचमेंट के एक्शन लेने के लिए शायद रुक जाएगा. I hope you understood about the we discussed enough about the attachment. Now the seizure. सीजर में मैं कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट सीजर में बहुत बार डिपार्टमेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स ले जाता है ओरिजिनल और हमारे पास कॉपीज नहीं होती. मैं टैक्स पेयर को पूछता हूँ, प्रोफेशनलों को पूछता हूँ कि इसके क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, नहीं सर हमें तो नहीं मालूम वो क्या लेके गए, बहुत सारा कुछ लेके गए. फ्रेंड्स, देयर इज an inbuilt right in the law that we are entitled to take the copies of whatever document they are taking. We should ask them, sir हमें कॉपी चाहिए, वो नहीं बोलते तो हमें बताना चाहिए, सर as per section 17(5) we are entitled to take the copies, so request to please provide the same. Arrest का भी थ्रेट दिया था आपके यहाँ पे, जो भी प्रोफेशनल से आपके किसी ना किसी क्लाइंट को कभी ना कभी ऑफिसर ने थ्रेट दिया होगा कि हम आपको अरेस्ट करेंगे. फेक इनवॉइसिंग इज अ वेरी big topic. We don't have time for the, it will require 2-3 hours, but normal fake invoicing में अरेस्ट होता है आज की तारीख में, बट ऐसी अरेस्ट नहीं कर सकते डिपार्टमेंट भी. there is again clear instruction from the department about the arrest, and department has referred this a judgment of Supreme Court. Is a recent judgment in case of Siddharth versus State of Uttar Pradesh with respect to arrest matter. This judgment of Supreme Court is referred by the GST department also. It's very important, friends, we should understand this wording of the judgment, what Supreme Court is saying. The personal liberty is an important aspect in the constitution. Like हमारे personal liberty, right to life and right to liberty is an important feature of our constitution. The occasion to arrest of an accused arises when there is an heinous crime or when there is an accused may abscond. उस टाइम पे हमें अरेस्ट करना चाहिए. Merely because arrest can be made because it is lawful does not require that arrest must be made. Very important wording by the Honorable Supreme Court कि आप अरेस्ट कर सकते हो lawfully, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अरेस्ट करना ही है, आप नहीं कर सकते हो. A distinction must be made between existence of power to arrest and justification for exercise of it. So Supreme Court has said that कि आपको अधिकार आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि आप अरेस्ट कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको अरेस्ट करना ही है. If arrest is made as a routine manner, it can cause a harm to the reputation of the person.
If the officer has no reason to believe that accused will abscond or he will disobey the summon, then we fail to understand why there is a compulsion on officer to go for arrest. Friends, आपके कोई भी टैक्स पेयर के केस में अगर टैक्स पेयर ओबीडियंट है, डिपार्टमेंट के सभी सम्मन को फॉलो कर रहा है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी में वो कोऑपरेट कर रहा है, दे कैन नॉट अरेस्ट हिम provided he is not a mastermind, etc. He might have done some mistakes, something he might have done, but you can just simply in your reply you can give the reference of this judgment. This is a very popular concept in the civil or criminal law, that bail is a rule, jail is exception, but we CAs are not aware about it. ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. Again, summon. Many times जब ये सम्मन आता है, पहले तो इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है, जाना है नहीं जाना है, बहुत बार इसको इग्नोर किया जाता है. Friends, we should not ignore the summon. It's a judicial document. आपको सम्मन आता है, आपको बोला गया कि आप इस तारीख को आइए, तो आप उस तारीख को जाने की कोशिश करिए. अगर आप नहीं जा पाते, you submit a letter with the acknowledgement. Dear sir, due to so and so reason, we cannot attend on the given date. We request to please provide the next date. It's very important, friends. If we cooperate in the summon, recently in one of the case while dealing with the case, Honorable by Bombay High Court ने बोला कि आप इतने समन क्यों इश्यू कर रहे हो, हमने पूरा चार्ट दे दिया था कि सर 10-15 बार समन आ गया है, 5-10 बार फोन पे डेट वाइज दे दिया, फोन पे बुलाया है, ईमेल करके बुलाया है, वगैरह वगैरह, और हम सब बार कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें हर बार थ्रेट किया जा रहा है, ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे. कोर्ट ने बोला क्या चल क्या रहा है. सो वी शुड ऑलवेज कोऑपरेट इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग. अगर आप सम्मन का को रिप्लाई नहीं करते हो, सम्मन के हिसाब से आप अटेंड नहीं करते हो, तो देयर इज एन पावर दैट ऑफिसर कैन लीव योर 25,000 पेनल्टी. मान लो कोई केस में आपका कोई संबंध भी नहीं है, बट डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है XYZ पर्सन का और उसके लिए आपको बुलाया है जस्ट टू क्रॉस चेक द फैक्ट्स, तो क्या आपने अटेंड करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर 25,000 की पेनल्टी लगा सकते हैं. देयर इज अ पावर टू देम इन द लॉ. नाउ डिन, ये जो डिन का फीचर है जीएसटी में, सेंट्रल टैक्स ऑफिसर्स दे आर फॉलोइंग दिस एंड सूनर और लेटर स्टेट अथॉरिटीज को भी फॉलो करना जरूरी है. डिन already there is a judgment from the Supreme Court that Supreme Court has said that DIN should be made compulsorily even to the state authorities also. But friends, आपने पॉपुलरली हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का वीडियो देखा होगा कि अगर कोई नोटिस के ऊपर डिन नहीं है तो आपको उसको फेंक के कचरे के डिब्बे में फेंक देना है. So it is really so that notice is really not valid, that order is really not valid if it is without DIN. It is mentioned in the law also. Any document, just see the second image over the slide. If any document issued without any DIN, it shall be treated as an invalid. It shall be deemed that it has been never been issued. So जब आप सबमिट करते हो कोई रिप्लाई, तो एक केस में ऐसे ही हुआ था, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच से हमने रिप्लाई सबमिट किया, बट एक लास्ट में लिख दिया, डियर सर, the notice issued by you was not having the DIN number, but as a good gesture we are still submitting it. However, as per the circular number so and so, it is assumed that this is not valid in law. So officer को समझ में आया कि लोगों को मालूम है, they know the law, they know the provision. He will 10 times think after that taking any actions if you are putting all such thing on the record. अभी आते हैं very important topic of ITC mismatch. Tax not paid by supplier. Supplier is not in existence. हम सब लोग, I am sure every one of here is dealing with all this mismatch notices. How to deal with that? What is the future of it? गजब खराब व्यवस्था है यार, ये मैंने जानबूझ के लगाया बिकॉज पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था. आज की तारीख में भी कुछ ज्यादा ठीक से सिस्टम नहीं है हमारे पास, एंड हमें बताया गया कि 2017 से आप सब कुछ देखिए, सप्लायर टैक्स पे कर रहा है नहीं कर रहा है, और आज हमें पूछा जाता है. सो क्या करना चाहिए इस केस में? अगर अमाउंट बड़ी है
So my opinion is that we have to fight it. And for the initial 3-4 years, there is a strong chances that it will be in our favor. There is a strong chances. I'm just giving you some reply pointer. Section 16 हमें सबको मालूम है कि बहुत सारे कंडीशंस है उसमें और बहुत बार अमेंडमेंट 2-3 बार अमेंडमेंट हुआ है. Section 16 जो बताता है condition to claim the credit. So, but what can be our pointer for our submission? Just मैं आपको दे रहा हूँ, ये बाद में आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर भी किया जाएगा. फ्रेंड्स, ये जो आईटी से मिसमैच की आपको जब नोटिस आती है, पहले तो नोटिस का कैलकुलेशन भी गलत होता है और जिस बेसिस पे नोटिस आती है वो जो एनुअल रिटर्न का टेबल आई थिंक 8 वो भी गलत होता है, उसमें के फिगर्स भी गलत होते हैं. सो आप ऐसे नोटिसेस को 2 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो. इसमें कुछ अरिथमेटिकली हम हमारी फॉर अ टाइम भी डिमांड ऑर्डर को डिमांड अमाउंट को कम कर सकते हैं क्या. दूसरा हमें झगड़ना है लॉ पॉइंट पे. तो मैंने ऐसे नंबर ऑफ केसेस में देखा है कि जब हम एनालाइज करते सिनेरियो को, रिकॉर्ड्स को, कैलकुलेशन को, तो 30-40% अमाउंट कम हो जाती है. बिकॉज एक तो 2A अपडेटेड रिफर किया नहीं जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट नॉर्मल अथॉरिटी डू कि आपका जो एनुअल रिटर्न का जो टेबल 8 है उसको कॉपी किया जाता है. उसके हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है, मान लो डिफरेंस आ रहा है 15 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 15 और टोटल अमाउंट है 50 लाख, वो आपको दे देंगे नोटिस. आप अगर रिसेंट 2A देखोगे और फिर डिफरेंस एनालाइज करोगे तो शायद वो डिफरेंस रहेगा मिनिमम मे बी 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसा. सो आपका ये पहला पॉइंट आपने ये करना चाहिए. डियर सर, यू आर रेफर द इनकरेक्ट फिगर्स ऑफ 2A. द टेबल 8A उसका एक प्रेस रिलीज भी था, शायद मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में कवर किया होगा कि वो जो टेबल 8 है वो सिर्फ हम कुछ मांग रहे हैं, आप ज्यादा सीरियसली मत लो. ऐसा गवर्नमेंट ने लिखा था एक प्रेस रिलीज में, आप टेबल 8 को ज्यादा सीरियसली मत लो. इनडायरेक्टली वर्डिंग है, हमें कुछ हमारे इंटरनल जानकारी के लिए हम आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं साहब. सो आपके रिप्लाई में आप डाल सकते हो. therefore we request you to consider the updated 2A as per which the amount as per the table 8A will change to this. अगर आपके पास reconciliation, again as I mentioned initially in my discussion, the common issues observed, reconciliation नहीं होता है. अगर आप reconcile करोगे तो आपको और डिफरेंस आपका कम हो जाएगा, तो वो एक आप काम कर सकते हो. उसके बाद रिसेंटली जो अभी सर्कुलर आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, CGST ने भी लाया है, पहले महाराष्ट्र में था, अभी स्टेट सेंटर का भी आया है कि आप अगर आपके सप्लायर ने टैक्स B2C में पे किया है, रॉन्ग GST नंबर है, तो आप उस तरह से लेटर लीजिए, CA सर्टिफिकेशन लीजिए, आपकी अमाउंट और कम हो जाएगी. और फिर बचे कुछ अमाउंट होगी, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो आप उसके लिए झगड़ सकते हो. And there is a enough chances in future that it will come in favor. What can be chances? First, पहले तो कोई GST लॉ में प्रोविजन ही नहीं था कि 2A में अगर नहीं आएगा तो आप क्रेडिट हमारा डिसअलाउड करोगे. ऐसा कोई सिनेरियो था ही नहीं, ऐसा प्रोविजन ही नहीं था पिछले एटलीस्ट इन इनिशियल पीरियड. उसके बाद में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गवर्नमेंट मेंशन इन द GST लॉ, they tried to put the infrastructure for the GSTR 1, 2, 2A, 2B, GSTR 3, 1A, 1B also. So that mechanism they are not implemented. Initially they said that कि हम लाएंगे और उन्होंने लाया नहीं, बाद में omit कर दिया. And recently only from the 1st October 2022, 1 अक्टूबर 2022 को ही उन्होंने GST लॉ में चेंजेस लाए, as per which they have removed the GSTR 1, 1A, 1B, 2A, 2, 3, 2B और 3 GSTR 3, all this form recently delete हुए हैं. इसका मतलब आपको अगर हमारा IT से डिनाई करना था तो आपको ये प्रोसीजर, ये मैकेनिज्म लाना जरूरी था, जो आपने नहीं लाया है. So this can be our one point also. Another thing is there is a press release of the government 4th May 2018 dated, where it is mentioned that there will be no automatic reversal of ITC. There shall be no automatic reversal of ITC. In case of default by in payment of tax by seller, recovery shall be made from the seller and not from the buyer. This is the government press release. And very important, again,
This is the GST Council minutes. Para 18.3 of the GST 20th GST Council meeting dated 21st July 2018. Now, friend, this is very important. This will give the idea what was in the mind of the lawmaker. What is mentioned in the minutes? Again, same wording. There will be no automatic reversal of input tax at the recipient end when tax is not paid by the supplier. Revenue administration shall first try to recover the tax from the seller. So from the above recommendation of GST Council, authorities are required to take against the defaulting seller. So ये जब चीजें हाई कोर्ट में जाएंगी और already गई हुई है, so definitely the outcome is going to be in the favor of taxpayer only. And again, one more, this is the judgment which is by Delhi High Court and again affirmed by the Supreme Court also. Even though it is a VAT era, but it's very important judgment and the recent judgment only. Arise India. Many of you heard about this judgment also. Now there is a concept in any law that the legal maxim lex non cognate ad impossibilia. What it means? It means ये Latin word है, ये GST में नहीं है. It means law cannot ask me to do something impossible. Law cannot ask me to do something impossible. लॉ मुझे ऐसा कुछ करने को नहीं बोल सकता जो इम्पॉसिबल है. वैसे ही सप्लायर ने टैक्स पे किया नहीं पे किया उसको कंट्रोल करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है. सो ये आपके सबमिशन का एक पॉइंट हो सकता है. सो इन दिल्ली हाई कोर्ट इन अराइज एंड अगेन दिस जजमेंट इज अगेन referred and affirmed by the Supreme Court also. What court has, another court has mentioned कि क्या हो रहा है, purchasing dealer is been asked to do the impossible. Purchase जो कर रहा है उसको बोला जाए तुम एक impossible activity क्या anticipate करो कि आप जिससे माल ले रहे हो that वो आपका टैक्स डिपार्टमेंट को देगा ही देगा या नहीं देने वाला होगा, तो ऐसे लोगों से आप बिजनेस नहीं करो. ऐसा एंटिसिपेट करने को बोल रहा है earlier VAT laws, now GST law, which is not correct. Law cannot ask me to do something impossible. Friends, on this legal maxim also, there are brighter chances that ये जो mismatch का जो फंडा है, इसके ऊपर हाई कोर्ट शायद फेवरेबल डिसीजन दे. GST में नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट है. Now in GST era, for the mismatch, already there are 2 or 3 favorable judgments. Some of that judgment I am referring over here. There is a judgment from the two judgments are there. So DY Battal, Madras High Court judgment. Here also, that's IT surveyed by the buyer was been asked to reverse because supplier has not made the payment of tax. High Court said that डिपार्टमेंट ने बोला कि हमने रिवर्स करने को बोला है बिकॉज बायर ने ये देखा नहीं कि सेलर टैक्स भर रहा है नहीं भर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट, हम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं. हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट डिपार्टमेंट डज नॉट अपीयर टू हैव टेकन द एनी रिकवरी अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट द सेलर. डिपार्टमेंट सेलर के अगेंस्ट एक्शन नहीं ली है. The examination of seller is necessary steps. Thus, the order against petitioner were liable to be quashed and matter remanded back, and inquiry should be made against the seller. Already Madras High Court का एक judgment आया है. And again, there is one more judgment, and this is LGW Industries versus others. Is a Kolkata High Court judgment. Friend, this judgment is referred to larger bank also, and it is referred in the Kolkata High Court in one more case. And all these 3 cases, this is a favorable order. In this case, what has happened? जो सप्लाई तो नॉन एग्जिस्टिंग था, आज के तारीख में नॉन एग्जिस्टिंग सप्लाई के बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं कि सप्लाई नॉन एग्जिस्टिंग था. डिपार्टमेंट ने आईटीसी डिनाई कर दिया. पेटिशनर का कहना था कि नहीं मैंने तो जेन्युइन ट्रांजैक्शन किया है, मेरे पास सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एंड आई हैव मेड ऑल ट्रांजैक्शन बाय बैंक अकाउंट. एंड पेटिशनर ने कहा कि मैंने जब ट्रांजैक्शन किया था तब तो वो रजिस्ट्रेशन एक्टिव था, और आज की तारीख में अगर वो सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंस, इसमें मेरी क्या गलती है? अगेन द सेम लीगल मैक्सिम
legs non cognized impossibly आप, मैं क्या हर रोज जाके उस सप्लायर को सलाम ठोकू, सलाम साहब आप हो ना, आप चला रहे हो ना बिजनेस, नहीं पॉसिबल। जब मैंने किया था तब वो सप्लायर एक्टिव था, वो बिजनेस कर रहा था, आज के तारीख में नहीं, तो मेरी क्या गलती इसमें? So court has given a reminded back this case to department with the direction that the department should consider all the aspects which petitioner is saying. Department should consider whether the payment is made by the bank account or not. Department should consider when the transaction were made, whether registration was active or cancelled. In such event, petitioner should be given the benefit of input tax credit. Very important remark by the court. So friends, उजाला जरूर आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा. Already this matter about ITC mismatch is pending in almost all the high courts in the country. Some of the favorable orders are already on the pipeline. In future, we'll have something from the Supreme Court, but उस टाइम तक हमें लगे रहना है. Otherwise, taxpayer मर जाएंगे अगर बड़ी अमाउंट है तो नहीं पे कर पाएंगे वो. और मैकेनिज्म भी नहीं था इनिशियल ईयर में, कैसे करते? आज की तारीख में ठीक है, आज हम सीरियस हो गए, टू भी आ गया है, क्लाइंट भी सीरियस है, हम भी सीरियस है, सब लोग सीरियस है, आज ध्यान रखा जा रहा है. बट शुरुआत में थोड़ी था, लॉ नया था, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को कुछ मालूम नहीं था. सो डेफिनेटली देयर आर राइट अप चार्जेस फॉर इनिशियल ईयर. Now, few of the issues I will discuss in a short manner about now the interest implication. आपने टैक्स तो जमा कर दिया था, रिटर्न लेट भरा था, डिपार्टमेंट बोलता है कि आपने रिटर्न लेट भरा है, हम आपसे इंटरेस्ट तभी भी लेंगे even though you have made the tax payment within due date. I think this is a common phenomenon. Anyone has received the notice for this suspect on this issue? Anyone has received the notice? किसी को आई है नोटिस विद रिस्पेक्ट टू कि आपने टैक्स जमा किया था विद इन द टाइम लिमिट, रिटर्न आपने लेट भरा था, बट डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दी है. So yes, few of the professionals have already received these notices. I am also dealing with such few notices. Friends, एक important अभी हमें समझना जरूरी है. जब इनिशियली सेक्शन 50 जो था, जो इंटरेस्ट के बारे में बात करता था, आप जब अगर आपको नोटिस आई तो आपको जब रिप्लाई सबमिट करना है फ्रेंड्स, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू सम पॉइंटर फॉर द रिप्लाई. सेक्शन 50 इनिशियली वाज टॉकिंग अबाउट कि आपको इंटरेस्ट देना वगैरह वगैरह. सेक्शन 50 वाज नॉट रेफरिंग एट ऑल अबाउट द डेबिटिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. अप टू 2021 it was not referring, June 2021 it was not referring to the debiting to electronic cash ledger. अगर ऐसा कंडीशन ही नहीं था कि मुझे कैश लेजर को डेबिट होना चाहिए, पहले क्रेडिट होता है फिर डेबिट होता है, तो आपका इंटरेस्ट कैसे मांग रहे हो सर? मैंने जमा तो कर दिया ना. मतलब एक सिंपल इस ग्राउंड पे भी आप आर्ग्यू कर सकते हो. Even though this provision is amended twice afterwards, but friends, जब भी retrospective amendment होता है और उस रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को से कुछ ज्यादा कंडीशंस अटैच की जाती है, ज्यादा कंडीशंस लॉ में लगाई जाती है, the number of judgment that in such a case that retrospective amendment is not retrospective, it is prospective. So ये जो सेक्शन 51 है, ये 2 बार retrospective amendment हुआ है, but still you can refer the old provision, you can mention that सर वो ठीक है इंटरेस्ट देना था, बट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में कोई जिक्र ही नहीं इस सेक्शन में. अगर नहीं है तो मैंने तो गवर्नमेंट को ट्रेजरी में जमा कर दिया पैसे, मेरे हाथ से तो चले गए, तो इंटरेस्ट का कोई संबंध नहीं है. There's already 2 judgments which are slightly in favor because facts are different. Nursing Ispat Limited, you will get these decisions, and Vishnu Pouching Private Limited. One is a Gujarat High Court, one is a Jharkhand High Court. These are favorable judgment where High Court said नहीं ठीक है, अगर जमा किया इन्होंने, कुछ issues था, कुछ problem था. See friends, there are some issues. Why we are not able to file the return on time? कुछ अलग issue होगा, कहीं पे कुछ कोविड था बीच में, कुछ होगा, इसलिए तो रिटर्न रेट फाइल हुआ है. बट हमने टैक्स तो जमा किया था, हमारे कैश लेज में पैसा तो पड़ा हुआ था, तो आपने अलाउड करना चाहिए. तो इन 2 केसेस में उनके फैक्ट ऑफ द केस जो थे उसके हिसाब से कोर्ट ने अलाउड किया है. फ्रेंड्स, नाउ अगर आप
QRMP स्कीम देखोगे, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, इस केस में क्या होता है, हम फर्स्ट मंथ में टैक्स जमा करते हैं, क्रेडिट कैश लेजर में क्रेडिट होता है, सेकंड मंथ में हम टैक्स जमा करते हैं, टैक्स लेजर में क्रेडिट होता है, थर्ड मंथ में हम जब 3B फाइल करते हैं तब वो डेबिट होता है। सो QRMP के लिए अगर डिपार्टमेंट ये अप्रोच रखता है कि हम अगर कैश लेजर में पैसा आ रहा है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि इट इज एज वेल टैक्स पेमेंट, एंड व्हाई नॉट टू द नॉर्मल टैक्स पेयर? Department has to give the same right, same application of provision to the normal taxpayer. And Article 14 of the Constitution, there is a right to equality. The provision needs to be implemented, interpreted in the same way for all taxpayer. आप क्वार्टरली वालों को बोलते हो कि आपने फर्स्ट और सेकंड मंथ को अगर टैक्स पेमेंट करते हो, सिर्फ भले आपका क्रेडिट ना हो, सॉरी डेबिट ना हो, तभी भी हम उसका टैक्स पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो व्हाई नॉट टू द नॉर्मल टैक्स पेयर? They have to do that. Now interest, whether in case of ITC, you have taken in ineligible ITC, incorrect ITC, department is asking the interest. So whether it's interest on the net or gross and what percentage. So in case of input tax credit, the interest is applicable only if the ITC is utilized. If you have just claimed the wrong ITC, you have not utilized it, there is no question of interest, because interest is always compensatory in nature. फ्रेंड्स, थोड़ा सा हेवी डिस्कशन हो रहा है और ऑनलाइन होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. इंटरेक्शन भी हम ज्यादा नहीं कर सकते, बट प्लीज बी अटेंटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रैक्टिस के लिए भी कि हमें सब चीजें मालूम होनी चाहिए. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ ये. This is my second session since morning. पहला सेशन मॉर्निंग में होता. Again, our home branch, पुणे branch में मॉर्निंग में for the students. This is second session. So interest ITC केस में आपको applicable होगा only when it is utilized, and that too at an 18%. So ये जो 24% से 18% हुआ है, इसमें भी मैंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. जब गवर्नमेंट व्हेन आई हैड अ मीटिंग विद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, तब मैंने बताया था कि ये रेट काफी ज्यादा है 24%, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस को भी बताया था, और इमीडिएटली विद इन 2 months दे हैव रिड्यूस्ड दैट टू 18%. और ज्यादा होना चाहिए था बट नहीं हुआ, बट ठीक है, एटलीस्ट 6% की तो रिलीफ मिली है. 180 डेज के ऊपर डिपार्टमेंट अभी स्लोली एक्शन ले रहा है. फ्रेंड्स, आज के तारीख में क्या ये प्रोविजन सही है, गलत है? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट? द इंटेंशन व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द प्रोविजन वाज टू प्रोटेक्ट द एमएसएमई. कि बहुत बार ऐसा होता था, टैक्स पेयर बोलते थे कि सर हम तो टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं बट हमारा कस्टमर हमें पैसा नहीं देता है. तो कस्टमर पैसा नहीं देता है, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाई, ठीक है हम आपको जीएसटी में कंपल्सन डालते हैं 180 डेज में पेमेंट करना है. बट आज के तारीख में मेरे हिसाब से 80% taxpayer are non-compliant, 80 to 90% taxpayer are non-compliant when it comes to 180. हर एक टैक्सपेयर केस में छोटे मोटे तौर पे या ज्यादा तौर पे जहाँ पे वर्किंग कैपिटल का काफी इश्यू, वहाँ पे ज्यादा नॉन कंप्लायंस है 180 डेज का. सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस? एज ऑफ नाउ वी विल हैव टू लिटिगेट इट. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फॉर आवर रिप्लाई और आवर व्हाइल ड्राफ्टिंग द रिप्लाईज, ये जो सेक्शन 16(2) में बोला गया है कि आप अगर when you fail to pay within 180 days, तो वहां पे वर्ड यूज किया है fail to pay. So there is a normal understanding that failure to pay means there is obligation to pay. But if my supplier is allowed me further time limit, supplier is saying that you make the payment within 1 year, within 10 months, then there is no question of failure on my side. Supplier himself has allowed. And friends, I have seen many instances in case of capital and goods industry. A big machinery having a cost of 10 crore, 20 crore, supplier himself allowed the 1 year, 1.5 year time limit for the payment. In such a case, the ITC reversal should not be attracted. One more point for submission is that section 16(2) was saying that अगर आप 180 days में पेमेंट नहीं करते हो तो you will have to
add that amount to your output tax liability. Again, please listen it carefully. सेक्शन 16(2) क्या बोलता था? अगर मान लो आपने अपने सप्लायर को टैक्स 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है, तो आपको क्या करना है? आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है। ये गलत है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मेरे आउटपुट की होती है, मेरे आउटपुट सप्लाई की होती है, उसमें ऐड करना कैसे पॉसिबल है? तो मैकेनिज्म भी नहीं है पहले के सालों में, तो इसका कंप्लायंस पॉसिबल नहीं है। और रिसेंटली इस बजट 2023 में, फाइनेंस बिल 2023 में प्रपोज किया है इस प्रोविजन को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने। अभी वो बोल रहे हैं कि आपको ये 3B में आईटीसी रिवर्सल करके दिखाना है। अभी वो 3B और आईटीसी रिवर्सल के बारे में बोल रहे हैं। 2017, 18, 19, 20, 21 और आज के तारीख आज भी यही प्रोविजन एग्जिस्ट करती है कि आपको आउटपुट टैक्स में जीएसटी में कैसे दिखाओ इसको? कोई बता मुझे तरीका कैसे दिखाना है जीएसटी R1 में आईटीसी रिवर्सल को? नहीं पॉसिबल। सो मैकेनिज्म भी नहीं है। सेक्शन 16(4) very important again. Credit not taken within the time limit allowed by the law. I am sure you must be dealing with the many such instances. इसके ऊपर हमें अभी झगड़ना ही पड़ेगा। Already this matter is again pending in almost all the high courts. Recently I dealt a case where I think 1 वीक का ही डिले हुआ है, सिर्फ 1 वीक का, that too in the COVID period, and 5-6 करोड़ का डिमांड नोटिस है। We'll have to fight it. What can be your grounds of submission? What can be pointer for submission? Friends, very important. Section 16(4) जो है ना, आप देखिए लॉ में लॉ मेकर आर सपोज टू यूज ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली। वो हर बार आपको बोलेंगे आपको डेबिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है, आपके क्रेडिट लेजर में आना चाहिए, ये आना चाहिए, फलाना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। पर सेक्शन 16(4) में वो क्रेडिट लेजर के बारे में बात ही नहीं करते। सेक्शन 64 में बोलते हैं आपको क्रेडिट लेना है, बस इतना ही। तो क्रेडिट लेना है, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्रेडिट लिया है तो सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन। दिस कैन बी वन पॉइंट ऑफ योर सबमिशन। Then section 16(4) was referring earlier to the GSTR3 return, which was never implemented. उसने बोला है ना due date of filing of return number section 39, which means GSTR3 only. So which was never implemented. Again, so due date cannot be applicable. Then my vested right, my substantial right cannot be just taken away for the procedural lapse. There are number of judgment of the Honorable Supreme Courts in earlier excise, service tax, VAT also. कि मेरा substantial right एक procedural lapse की वजह से डिपार्ट गवर्नमेंट नहीं ले सकता है। My right to do the business is getting hampered. Article 19 of Constitution. There is a seriously my right to life, right to do the business is affecting. If you are denying me this credit just on the procedural ground, 1 महीने का 15 दिन का डिले हुआ है। So violation of Article 19 on this fundamental violation of right alone, we can fight the case, and there are brighter chances कि डिपार्टमेंट को आगे जाके एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, उनका कुछ ना कुछ इसमें मैकेनिज्म लाना ही पड़ेगा। Now, e-way bill related issues. फ्रेंड्स, ई-वे बिल में काफी जीएसटी या मेरे हिसाब से कोई भी लॉ में सबसे कोई खतरनाक चीज है तो ई-वे बिल के प्रॉब्लम्स है। ई-वे बिल में छोटी भी मिस्टेक हो जाती है, गाड़ी अगर पकड़ी गई तो आपको 200% पेनल्टी लगती है, 200% पेनल्टी। आई एम डीलिंग विद नंबर ऑफ केसेस जहां पे पेनल्टी 50 लाख, 16, 1 करोड़, 2 करोड़ की है, और मिस्टेक क्या हुआ है? छोटा मोटा मिस्टेक कुछ तो हुआ है। एक तो जैसे पिन कोड या एड्रेस या कहीं पे डिस्क्रिप्शन, कहीं पे टैक्स रेट गलत सिलेक्ट हुआ ई-वे बिल पे, बट इनवॉइस पे सही था। एक केस में तो ऐसे हुआ था कि गाड़ी सिर्फ खड़ी थी दूसरी जगह पे, सिर्फ खड़ी थी, मेरे यहाँ पे पार्किंग को जगह नहीं थी, मैं दूसरी जगह गाड़ी खड़ी रखी थी, ई-वे बिल वैलिड था। ऐसे सब सिनेरियो में ई-वे बिल में कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी हार्श। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है ई-वे बिल में? आप होते हो पुणे में, गाड़ी पकड़ी गई, कोई तो भी तमिलनाडु में, आपका क्लाइंट होता है दिल्ली में, कहीं ट्रैवल करता होता है, और आपको सुबह सुबह 7 बजे आपका 8-10 बार फोन रिंग करता है, गिंग 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 गिंग।
मैं तो समझ जाता हूँ, सुबह सुबह कभी फोन वाइब्रेट हो जाता है ना 8-10 बार, समझ लेना गाड़ी पकड़ी गई है, 100% गेस कर लेता हूँ, और अभी तक 100% सभी बार मेरा गेस सही हुआ है। बट फ्रेंड्स, इवन में भी हमें कुछ ऑप्शन है, कुछ तरीके हैं जहाँ पे हम इस आगे एक्शन होने वाला एक्शन को रोक सकते हैं। क्या है? एक सर्कुलर है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। इस सर्कुलर में बोला गया है कि छोटे मोटे मिस्टेक्स होते हैं ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, पिन कोड में मिस्टेक है, एड्रेस में मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट नंबर में मिस्टेक्स है, HSN में मिस्टेक है, व्हीकल नंबर में मिस्टेक्स है, तो एक छोटे मोटे मिस्टेक के लिए ना आपको मैक्सिमम 1000 की पेनल्टी लग सकती है, अदरवाइज नहीं लग सकती, आपको इससे ज्यादा नहीं लग सकती। बट टैक्सपेयर्स, वी प्रोफेशनल्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सर्कुलर, वी आर नॉट अवेयर राइट ऑफ दिस सर्कुलर, और हम फिर झगड़ते बैठे, सब देखो कुछ होता है तो बहुत बड़ी अमाउंट है वगैरह, जरूरत ही नहीं है। ये छोटे मोटे इशू के लिए 1000 की मैक्सिमम पेनल्टी है। एंड फ्रेंड्स, ईवी बिल के केस में तो मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स आर फेवरेबल जजमेंट, मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स, 2-3 आई एम जस्ट रेफरिंग, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ जजमेंट फेवरेबल जजमेंट्स। अभी यहाँ पे गाड़ी पकड़ी गई थी, वैल्यूएशन बोला आपने, गलत वैल्यूएशन किया है, हमारे हिसाब से वैल्यूएशन गलत है वगैरह, फिर वो सब MOV 1 2 3 7 8 9 सब एक्शन हो गई। हाईकोर्ट ने बोला नहीं नहीं नहीं, वैल्यूएशन में जा ही नहीं सकते, आपका काम क्या है, गाड़ी रास्ते में चेक करना और इनवॉइस और डिस्क्रिप्ट गुड्स मैच हो रहे के देख रहे हैं, वैल्यूएशन में जा ही नहीं सकते। वैल्यूएशन के लिए आप सेक्शन 15 में कार्रवाई करो, सेक्शन 73 के अंदर नोटिस भेजो, अंडर 129 कर नहीं सकते हो। रूट चेंज हुआ था, इसके लिए भी गाड़ी पकड़ी गई थी, कोर्ट ने बोला ठीक है, हो सकता है, ऐसे छोटे मोटे चीजें हो सकती है, टाइपोग्राफिकल एरर हो सकती है, वी आर ह्यूमन, टू एयर इज इन ह्यूमन बोलते हैं, बराबर है। सो कोर्ट ने हर एक केस में, ईवीएल के केस में, हर एक केस में फेवरेबली ऑर्डर आती है। बट फ्रेंड्स, ईवीएल के केस में क्या ध्यान रखना जरूरी है, 2-3 चीजें। आपकी गाड़ी पकड़ी गई, ऑफिसर सेइंग में ऑर्डर इशू करने वाला वगैरह वगैरह, और वो ऐसे स्टेट में पकड़ी गई जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो एक टेम्पररी आईडी जनरेट करता है। वो टेम्पररी आईडी जनरेट करते वक्त वहां पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना पड़ता है। मोस्ट टाइम वो नंबर किसका दिया जाता है वो पता ही नहीं होता है हमें। ऑलवेज इन सच केसेस यू मेंशन दैट आप ये नंबर, ये ईमेल आईडी आपके टेम्पररी आईडी जब आप क्रिएट करोगे, क्योंकि आपकी ऑर्डर होगी, आपका अपील होगा, वो सब कुछ उस आईडी पे होता है, टेम्पररी आईडी पे, और उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारे पास, अगर हमें रीजनरेट करना है तो मोबाइल और ईमेल आईडी पे OTP आता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, इस सर्कुलर को आप ध्यान में रख सकते हो। तीसरा, ईमेल की प्रोविजन में लिखा हुआ है कुछ कुछ केस में आपको पार्ट बी जरूरी नहीं है, पार्ट ए जरूरी नहीं है वगैरह वगैरह, आपको कुछ केसेस में एग्जम्प्टेड किया गया है ईमेल को वगैरह। तो ऐसे केसेस में आपकी गाड़ी, जैसे मेरे केस में गाड़ी पकड़ी गई थी, और व्हाट वाज हैपनिंग दैट ईमेल बनाया था एंड ट्रांसपोर्टर का 2 लोकेशंस थे, तो उसका एक मेन था उस, और लोकेशन से ट्रांसपोर्ट लोकेशन पे गुड्स मूव हो रहे थे। तो इवन प्रोविजन में लिखा हुआ है कि आपके लोकेशन ट्रांसपोर्ट लोकेशन पे गुड्स मूव हो रहे, तो पार्ट भी नहीं होगा तो भी चलेगा। तो हमने उसी सिंपल ग्राउंड पे उस एक्शन को वहीं पे स्टॉप किया, आगे बढ़ने नहीं दिया। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोविजंस। Some few, 1 or 2 judgments I will take more. फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन होता है, रेड होती है, ऑफिसर बोलते हैं हम जाएंगे नहीं जब तक आप 50 लाख का टैक्स पेमेंट नहीं करते हो, और शायद आप 50 लाख का टैक्स पेमेंट कर भी देते हो, उसके बाद ऑफिसर 8 दिन वापस बोलता है और 50 लाख का करो, और आप ऑफिस एक बार 50 लाख का पेमेंट करते हो, आपका आप मतलब आपके टैक्स क्लाइंट्स और टैक्स पेयर। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स और force the tax during investigation. They have to determine it under section 73, 74, 122, whatever it may be. They have to do all these proceedings. In this case, what has happened? वो आए, उन्होंने सब लिख के लिया, टैक्स पेयर से ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। टैक्स पेयर का बाद में कहना था कि मेरे को मालूम ही नहीं क्या लिखा है और ये सब कुछ गलत है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, सब कुछ मैंने कुछ पाप किया ही नहीं है, और मेरे तरफ से फोर्सफुली टैक्स कलेक्ट किया है। तो assessee filed a petition in the court कि kindly refund the, this is against DGGI,
Give me the refund of the amount collected during the investigation. वो मैटर तो रहा बाजू में, या टैक्सपेयर सेइंग गिव मी द रिफंड, तो डिपार्टमेंट ने बोला सर आप ये जो आदमी बोल रहा है कि ये गलत है वगैरह वगैरह, ये गलत होता है, इसने 2 बार टैक्स पेमेंट किया है इन्वेस्टिगेशन में, तो 2 बार क्यों करता? हाई कोर्ट सेड दैट merely because officer has under stress of investigation signed the statement and made a few payments cannot lead to the self assessment or assignment. There is no record which is showing that there is a officer has ascertained the liability. Therefore, it was held that amount collected of rupees shall be refunded to the petitioner. एक रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की केसेस थे जहां पे ऑफिसर को भी फाइन लगाई थी. ITC blocking, friends, this ITC blocking, in law there's a clear cut provided that ITC can be blocked for maximum for 1 year. After 1 year they cannot continue that blocking, they have to remove the block. So in your case, if any of your client there's a ITC is blocked and is more than 1 year, you can simply mention the provision, I think section 80 rule 86A, I think that as per which you cannot continue for more than 1 year. And there are number of high court judgment, 2 I am referring over here. इस केस में क्या होता कि वो आईटीसी मिसमैच था वगैरह वगैरह, तो डिपार्टमेंट ने उसका आईटीसी ब्लॉक किया, उससे रिकंसिलिएशन मांगा था वगैरह वगैरह, और वो 1.5 साल तक दे ही नहीं पा रहा था, तो डिपार्टमेंट ने बोला हम इसलिए कंटिन्यू कर, हाई कोर्ट बोला नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट कंटिन्यू व्हाट सो रीजन माइट बी, इवन द टैक्स पेयर इज डिलेइंग द इंफॉर्मेशन, यू कैन नॉट कंटिन्यू आफ्टर 1 ईयर. गुजरात हाई कोर्ट ने तो और एक दूसरे केस में पहला जजमेंट जो था वो बॉम्बे हाई कोर्ट का था, गुजरात हाई कोर्ट के तो उससे एक स्टेप आगे गई. We make it clear that next time we came across any case where the ITC is blocked for more than 1 year, the authority will be held personally liable. So friends, so for ITC blocking there are really favorable judgments. 1 साल के आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनको बाकी एक्शन करनी चाहिए, नोटिस भेजो, ऑर्डर, अपील, फिर वो फलाना स्टेजेस में जाना चाहिए. सो कॉमन मिस्टेक्स हमने डिस्कशन में किया ही है. So friends, in GST there are huge changes happening. There is a huge load on the professionals. Therefore, very important that we should take the utmost care for the compliance, do the reconciliation, matching, working, and for that, of course, we should charge the supplier, our clients also, and clients should pay. If not paying, there is no point in having all such tension. So with this, I completed my session by saying that every big change is hard at first, messy in the middle, Georges in the end. So GST आने को बहुत समय लग गया और बहुत मेस, मेरे हिसाब से मेस में मेस हो रहा है, but hope ये 4-5-10 सालों में, मालूम नहीं कितना समय लगेगा, but we'll have a good law. With this I completed my session. Thank you for your patient hearing. आप patient hearing आपको करना जरूरी था, आप सब muted ही थे मेरे हिसाब से. And also thanks to the branch, newly elected chairman Rajesh sir, Sachin sir, and whole the committee. Thanks for the opportunity to me. Over to you. Thank you, Swapnil sir. In fact, it was indeed a very detailed and detailed session as well as a detailed explanation. So participants, I would request if I think most of the queries sir had solved during the session, but still if anybody has any queries, they can post in the Q&A box and maybe we can take those queries. So I'll just try to, already I tried to reply, sir. Friends, if you have any question, you can contact me afterwards also. And also I do keep sharing on the updates. So you can just message me on the given number. So we can send you the updates also. So few questions I will try to take, already I've taken. Sir, just one thing even I wanted to ask you. Can you share this presentation so that we can share it with all participants? Thanks a lot. So participants, the branch will. Yeah, Rajesh, just 1 minute. So participants, we will send you a copy of this presentation at the end of this 5-day series. And as sir said that if anybody has any queries which remains unanswered, maybe we can mail it to him. Already he has taken a 2 hours long session. So I would now invite Rajesh Agarwal to express a formal vote of thanks. Over to you, Rajesh. Thank you, Sachin.
on behalf of Pune ICI and all the participants, first of all thank Swapnil for accepting our invitation and delivered uh, on the topic, which is very diversified, and you have well covered, Swapnil. I really appreciate the way you have covered in just 2.5 2 hours. Share, scissor, e-way bill, all aspects of litigation you have covered in just a span of 2 hours. Really appreciate. You have covered all the updated recent case laws, and you have touched upon all the uh, all the key factors because of which we are receiving the notices, and the solution to that also you have given. I really thanks a lot from bottom of my heart. Thank you you. have touched you have Yeah, touched difference between 73 74, which many of us not well well understood. So this rightly you have mentioned. No, as of now I think 17 18 there is no much difference in relevant date, but definitely it impacts for the future date 2018-19 onwards. We have most of our cases are under 73 only, but department is always trying to put it under 74. Section 16, you have well noted there is no clarity in section 16 about two-way reconciliation. Read with rule 69, which is specified that reconciliation will be postponed as per the reconciliation available. That's why there are contradictory provision with effect from 8 October 1936-4 and rule 69. So we can take the benefit of rule 69, read with 16. Thank you, Swapnil. And I also thank on behalf of Pune branch for all the participants for patience listening. This topic is not regular for the participants. That's why I think could be little bit boring for some participants, but you made it interesting. Thanks to all participants and Swapnil. Thanks a lot. Thank you, sir. Yeah, request to all participants that tomorrow again we will be having the second session of this 5-day GST Gyansatra Series. So all of you are requested to join between 4:45 to 5 o'clock, and we will be starting at sharp 5 tomorrow as well. Thank you, everyone. Friends, if I missed out to reply anyone, you can contact me afterwards also. So thank you. It will be great, Swapnil. It will be great. Yes, sir. Thank you. So, Thank you, sir. thank you, everyone. Thank you. Bye.